अस्सलाम वालेकुम you all. This is Fahad Baiga from JN Developers. और आज मेन मोटिव फॉर दिस वीडियो इज इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. और इस वीडियो में जो डेटा सारा कलेक्टेड और डेटा ड्रिवन है, हम लोग उसी डेटा को एनालाइज करते हुए विल सी मार्केट पोटेंशियल, फ्यूचर ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज इन कॉन्टेक्स्ट टू wealth management and asset acquisition. Before I start with the data and analysis, one thing I want to make you all sure. अच्छा, इसमें हमारे पास बड़े लिमिटेड से और कुछ प्रेसेंट्स हैं that still have potential. कुछ जॉन से हैं they are at their age of maturity. Some presents do have this potential. लेकिन अगर हम लोग overall बहरिया की बात करें, there is huge potential down the line for another 4 to 5 years. क्योंकि it all depends on end users. लेकिन इस टाइम पे यहाँ ट्रेडिंग और रोलिंग जोन सी है सिर्फ एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए हो रही है. सो लेट मी जस्ट शॉर्ट यू डाउन टू द प्रेजेंटेशन. और इसमें हम लोग ये बेसिकली देखेंगे कि हमने कहाँ ग्रोथ देखी, कितने परसेंट ग्रोथ देखी, फ्यूचर ग्रोथ हम लोग किस तरह देख रहे हैं, और करंटली बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल किस तरह है. Some of the parameters that are defined in the graphs below, उसमें दो पैरामीटर्स पे हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले ब्रेक ग्रोथ, जिसमें हम लोग डिफाइन करेंगे लॉन्चिंग प्राइस, और लॉन्चिंग प्राइस के बाद अब तक होल टेन्योर स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 अंटिल टिल डेट हम लोगों ने कौन सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी. दिस वुड बी अ लीनियर ग्राफ. इसमें आई विल एक्सप्लेन के कहाँ पे डिप आया, कब डिप आया, और उसके बाद हाउ वेल द परसेंट इज ग्रोइंग. और जो दूसरा पैरामीटर है फॉर एनालिसिस दैट इज ओवरऑल ग्रोथ. लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे मंथ ओवर मंथ ग्रोथ, क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ और हाफ ईयर ग्रोथ. दोनों पैरामीटर्स हैव इट्स ओन इंपॉर्टेंस. जो एक कंप्लीट एक्सपोनेंशियल लीनियर पैरामीटर होगा उसमें हम लोग देख लेंगे कि अगर एक चीज 100 रुपए से शुरू हुई तो 18 महीने या 24 महीने के बाद वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, और हमें कैपिटल गेन्स इन कॉन्टेक्स्ट टू कैपिटल गेन्स कितना प्रॉफिट नजर आ रहा है. जो मंथ ओवर मंथ और ब्रेकडाउन व्यू हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग वी कैन क्लियरली डिफाइन के कौन से महीने इन्वेस्टमेंट होल्ड करने के हैं, कौन से महीने बाइंग के हैं, कौन से महीने सेलिंग के हैं. सो दिस गिव्स यू ओवरऑल व्यू और एक्सट्रैक्शन और अ कंप्लीट ईयर समरी के साल में किस टाइम इन्वेस्ट करना है, किस टाइम होल्ड करना है, और किस टाइम यू हैव टू लेट द एसेट गो एंड बाय अ न्यू वन. So there are very few percents I'll be talking about today, जिसमें हमारा percent 16 होगा, 21 होगा, 22 होगा, percent 30, 32, 34 and percent 40. So let's start off with percent 16 first. Now there are two graphs attached in one presentation. जो सबसे ऊपर वाला है this graph, as you can see here, ये percent 16 की overall growth है from launching price until today. एक ग्राफ आई विल एक्सप्लेन यू इन वेरी डिटेल, और उसके बाद we'll just go into the nutshell of what's happening and what's cooking in a presentation. अच्छा, as you can see here, percent 16 की launching price कौन सी थी, like every other 250 square yard in Bahria town, वो 28,50,000 रुपए थी. September 2020 में the prices were 46% above than the actual launching price. It was a very good start for percent 16. After 46% prices shook up to 50% in December 20. उसके बाद 64%, then 72%. Now again 72% is in context to the launching price. अगर launching price 28,50,000 या किसी भी एक प्रोडक्ट की 30 लाख launching price थी, तो 72% increase in the launching price and not just the price before that month. तो सितंबर 2021 में हमने देखा इट मूव्ड अप टू 72%, अक्टूबर 21 में 77%. अच्छा, परसेंट 16 में वी सॉ अ वेरी स्लाइट डिप दैट वाज अ नेगेटिव 3% बैक मार्केट इन नवंबर 2021, which is not expected but somehow not very much to be afraid of, क्योंकि like any other conventional business, real estate is also in fact just a business. So there are seasons to which you have a great growth and then there are seasons to which you're stagnant. So percent 16 में we saw -3% market coming back, मगर in the very next month it again shook up by 2% and it would definitely grow more. Now this is the overall growth rate from starting point A,
दैट वाज द लॉन्च अंटिल नाउ. अगर हम लोग प्रेसेंट 16 के मंथ ओवर मंथ या क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ की बात करें, नाउ हियर कम्स द सेकंड ग्राफ. Again, you could see that's 46%, ये 46% and this 46% is same. For instance कि अगर एक चीज़ 10 रुपए की लॉन्च हुई है और उसके बाद सितंबर 2020 में 46% उसके अंदर गेन आया है, तो वो 100 रुपए की चीज़ ultimately comes up to 150 rupees approximately. So this is what defines the 46%. सितंबर 2020 के बाद दिसंबर 2020 में 8% ग्रोथ आई, not in 100 rupees the initial price, in fact the 150 rupees जिसमें ऑलरेडी हम लोग 46% ग्रोथ देख चुके थे. उसके बाद इस नई प्राइस में again there was a 28% ग्रोथ. उस 28% ग्रोथ के बाद सितंबर 2021 में it was a 22% ग्रोथ. अक्टूबर 2021 में इस 22% ग्रोथ में there was an addition of again another 17%. और नवंबर 2021 में there was a decrease in -13% market back. This -13% and this -3% are ironically the same, मगर the values are different because in this explicitly in this graph we are looking at just one defined figure that was the launching price, जबकि इस नीचे वाले ग्राफ में we always change our figure to the last price. जैसे कि 21 जून 2021 की अगर हम लोग प्राइस कंपेयर करें, so we are comparing it with the price of December 2020 and not with the initial launching price. तो इस वजह से you could see a -13% dip. That's not very huge. Again, जिस तरह ऊपर के बारे में मैंने आपको बताया कि real estate is also a business. There are slums, there is a market back, मगर it always goes up. -13% के बाद it again took up a massive shot of 8% positive. So that's not just 8%, that is 8% plus the -13. So we are talking a total of 21% growth in December and January. And of course the market would definitely grow on. A quick summary of Precinct 16. जिसके बाद हम लोग हर अगले ग्राफ में will just be looking at the major figures and then would directly be jumping into the nutshell. तो Precinct 16 का अगर हम लोग ओवरऑल ग्रोथ देखें, हाईएस्ट पीक वाज 77% टू द इनिशियल लॉन्चिंग प्राइस. P16 hit the highest peak from launching price until October 2021. अच्छा, ये सारी चीजें they are very much defined. I do have the data collected which is not a tertiary data, not a secondary data, but that's actually a primary data, जिसके मैं links available कर दूंगा. या अगर आपको you need any help from the data or me, give me a call at the given number and we can have a conversation. इनिशियल ग्रोथ Precinct 16 की फ्रॉम द लॉन्चिंग प्राइस और उसके बाद जब ये फाइलें इसकी रीसेल पे आई, दैट वाज 46%. जैसा कि पहले भी मैंने आपको समझाया, 100 रुपए की चीज आप लॉन्च करें, 46% इज 146 रुपीज की वो चीज बिक रही है. सो देयर वाज अ 46% ग्रोथ इन इट. 28% growth, the best growth was month over month, that was for 28%. You could also define it as quarter over quarter growth, जो कि जून 2021 में थी. और ये तीन तो पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए. इफ यू लुक एट द नेगेटिव पॉइंट, तो 13% मार्केट बैक आई थी, दैट वाज नवंबर 2021. लेकिन उसके बाद अगेन Precinct 16 अगेन केम इनटू द बेस और उसके बाद दैट वाज ऑल अगेन इन पॉजिटिव. लेट्स जंप टू Precinct 21. Precinct 21 की लॉन्चिंग प्राइस अगेन एक 250 स्क्वायर यार्ड की लॉन्चिंग प्राइस थी, लेकिन लॉन्च के बाद वो -27 में चला गया. फॉर इंस्टेंस 100 रुपए की चीज ली, -27 में गई, तो 100 रुपए की चीज आपकी बिकने लग गई अप्रोक्सीमेटली 73 में. सो देयर वाज अ लॉस इनिशियली, लेकिन सितंबर 2020 के बाद दिसंबर 2020 में वो -27 का लॉस -20% पे हो गया. और 2021 वाज एक्चुअली द ईयर फॉर Precinct 21 एज वेल, क्योंकि 16% ग्रोथ, उसके बाद 37% ग्रोथ, देन 47% ग्रोथ, 51% ग्रोथ एंड 54% ग्रोथ. अनलाइक Precinct 16, Precinct 21 में कोई इस तरह का हमने डिप नहीं देखा, बट अंटिल नाउ, क्योंकि देयर इज अ स्लाइट मार्केट बैक इन Precinct 21, नॉट वेरी क्लियरली डिफाइंड हियर बट देयर इज. और अगर मंथ ओवर मंथ का ग्रोथ देखें तो 27% नेगेटिव में ही था, 8% पॉजिटिव में गया. This is also defined here कि -27% से -20% पे गया, तो there was 8% increase. उसके बाद फिर जून 2021 के फिगर्स, और इसके बाद there was a little merge in the market, a little dip in the market,
क्योंकि सितंबर 2021 के बाद से मार्केट उस तरह ग्रो नहीं करी जिस तरह जून में या सितंबर में करी थी. तो profits were going down by 16%, 9% and ultimately 5%. But again, this is nothing to worry about because this is what market is about. अगर आप लोग देखें तो सितंबर में भी ग्रोथ यहाँ पे उठ रही थी और उसके बाद it rose up in June 2021. Similarly, यहाँ पे market is stable या is slightly down. मगर as soon as the months are passing by, February, March, April, we are again expecting a huge hike for up to 30% in June 2021. So in a nutshell, for P21, highest peak was 51% in November 2021. Initial rate was negative 27%. Best month over month was June 2021, that was 28%. और market back जो हमने expect किया और analyze कर रहे हैं, that's minus 5% in December 2021. Similarly for P 2022, these are the graphs. Or in a nutshell, 56% was the highest peak. And that was December 2021. 16% market back आई थी in September 2022. Initial growth भी negative 16% पे चली थी. 35% was best month over month growth जो कि June 2021 में आई. और फिलहाल currently market is 6% down. Again, nothing to worry about. This is like any other conventional business. Real estate is a business. So there are seasons coming in. लेकिन December के बाद January, February would market go up again, or June definitely would be hitting the target. In the start when I defined के this video is explicitly for investors, वो यही था. और जब मैंने define किया कि what is the best buying timeline and selling timeline, defining January and February would be the best time to buy a property and then hold it for 4-5 months. Expect a capital gain for up to 30% and 40% defining on percent you are most likely to invest in. उसके बाद sell it in June, July, August or September. Hold it for 2 or 3 months, buy a new plot, and this is what rolling is all about. Precinct 30 is a very nice precinct, all level up. लेकिन यहाँ पे end users ज़्यादा है, so I might expect that this is almost reaching to its maturity level. Still there is a room for investment, but that's a little long term with a slow growth. Maybe 18 महीने या 24 महीने. मगर real quick in a nutshell, Precinct 30 was at its highest peak by 70%. In layman's terms, 100 रुपए की चीज was now selling for 170 rupees in a very short span of time. 70% peak Precinct 30 की आई November 2021 में. Initial growth इसकी negative नहीं थी. Precinct 30 was positive from the start. September 2020 में that was 7% more than the initial launching price. Best month was June 2021 where we expected 38% growth. Or currently Precinct 30 is 2% negative. Reason being ज़्यादातर plot end users के पास हैं, so we do have this little out of equilibrium from supply and demand perspective. Precinct 32, this is the evergreen precinct. यहाँ पे we definitely see a lot of hits and misses. That was 51% highest peak. That was December 2021. Ironically, Precinct 32 is one of the only precinct here in Bahria town जिसने जब पूरी market stable थी, rates were not going up, ironically not coming down too, लेकिन Precinct 32 still was flying high. Initial growth Precinct 32 के that was 0%. September 2020 में Precinct 32 का plot it was as a conventional rate for 250 square yard. Best growth month over month was 39%. That was September 21. और market back Precinct 32 की नहीं आई, but we also witnessed the least growth of 6% as per January 2022. Precinct 34, the most ideal precinct. Excellent location, sport city, next to Eiffel Tower, touching its boundaries to Jinnah Avenue, stretching 100 feet wide road within the middle. लेकिन 34 की highest peak it was 60%. Initial growth it was minus 21%. Reason being far from the main gate, I presume. Best month over month growth was September 2021. That was 33%. और Precinct 34 की we witnessed no market back. मगर slow growth जो सी है it came as low as 4%, and this is December 2021. लेकिन the best thing about Precinct 34 is as soon as we hit January 2022, Precinct 34 is going high. Current market Precinct 34 की is
Current market is at positive 8% or expected to grow high. Precinct 40. I might say Precinct 40 Precinct 40 and 34 are siblings to each other क्योंकि इन दोनों की price categories varies exactly the same. There might be a little dip of 200 to 300,000 for Precinct 40 over Precinct 34. लेकिन overall growth was 61%. That was good. Initial growth was negative 20%, मगर that caught the pace real quick. Best month was September 2021, जिसमें 33% growth थी, and that was month over month. और Precinct 40 की we see no market back, but a very very least capital gain for 4% in December 2021. मगर as we are witnessing a very very high spike in Precinct 41 and 43, उसकी वजह से Precinct 41 के rates भी they are growing at a very very decent pace. This is mean and average prices of each precinct we just spoke about. इसके accordingly ही हम लोगों ने graphs adjust किए और growth percentage निकाली है. Now this is an average with 1 million more than the least plot and 2 millions less than the most expensive plot. For instance 28,50,000 launching price थी, सितंबर में यहाँ तक price increase की और December 2021 and January 2022 में we are expecting average price in Precinct 16 is 1,19,00,000 or the maximum plot can go up as high as 145 or the least plot here in Precinct 16 currently at the moment is at 98 non-paid. Similarly goes with all other precincts. Now I'm attaching this link and PDFs to the description so you could have a very detailed view of whatever we spoke about. For any other inquiries and questions, just do give me a call. Feel free for that, and don't forget to like, subscribe, comment and hit the bell icon. Thank you.